Welcome to everyone. I am going to discuss about human reproduction in gametogenesis. Gametogenesis, it is the process by the primary male and female sex organ to produce male and female gamete is known as gametogenesis. Gametogenesis, spermatogenesis and oogenesis रे होता है मेल गैमेटी को स्पर्म and female gamete को ovum कहते हैं. Spermatogenesis, it is the process by which the immature germ cell mature cell. Oogenesis, it is the process which by the immature female cell produce to form a ovum or mature cell. Spermatogenesis, spermatogenesis immature germ cell ଯେତେବେଳେ sperm ହୋଇଥାଏ produce ହୋଇଥାଏ we call spermatogenesis. ଏଥିରେ କିଛି step ଅଛି. स्पर्माटोगोनिया तो ये डिविजन हेले प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स मिलिबो देन सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स तापर स्पर्माटोसाइट्स फाइनली मैच्योर सेल आसी जाए. ये जो स्पर्माटोजेनेसिस यार प्रोसेसटा इट बिगेन विथ पॉवर्टी. स्पर्माटोगोनिया अच्छी फर्स्ट कौन थे दिस स्पर्माटोगोनिया इट मल्टीप्लाई बाय मायोटिक डिवीजन टू इंक्रीज इन द नंबर द प्रेजेंट इन द इनर वॉल of the seminiferous tubules. Each spermatogonia is haploid and contain 46 chromosome. यहाँ पर स्पर्माटोगोनिया जो होता है ताको प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स मध्य कहते. So spermatogonia called a primary spermatocytes periodically undergo meiotic division to form a two haploid cell called as secondary spermatocytes. It contains 23 chromosomes. नेक्स्ट स्टेप रे कौन होता है जो सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स दे प्रोड्यूस टू फॉर्म 4 haploid cells after they undergo second meiotic division and they are called as spermatocytes. They also contain 23 chromosomes. तापर जो स्पर्माटोसाइट्स मिलिला देन द स्पर्माटोसाइट्स अंडरगो स्पर्माटोजेनेसिस टू फॉर्म स्पर्माटोजोआ और sperm from then the sperm heads are embryoned in the serotelli cell and finally they are released seminiferous tubules by the process of seminiferation. This is process. स्पर्माटोगोनिया अच्छी मल्टीप्लाई हेले मायोटिक डिवीजन द्वारा जितेबाला एठी मायोटिक डिवीजन हैला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स आसिला एंड दे कंटेन 46 क्रोमोसोम दे आर हाइप्लॉइड अगेन जितेबाला प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स आसिला देन इट अंडरगो मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस टू हाइप्लॉइड सेल एबे हेगला टू हाइप्लॉइड सेल वी कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स. Secondary spermatocytes again produce to form to 4 haploid cell. गोटे secondary spermatocytes दीटा and आउ गोटे दीटा हबो. Secondary spermatocytes परे and they contained 23 chromosome. ए स्टेज रे secondary spermatocytes 4 haploid cell produce करूची ताको spermatocytes कहा जाए. यहाँ पर जो हेता है sperm. सो ए प्रोसेस को स्पर्माटोजेनेसिस कहा जाए. एथिरे दुईटा चीज आसीगला स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिनेशन. Spermiogenesis means the process of in which the immature spermatocytes produce to form sperm cell or spermatozoa. Then spermionation in which spermatozoa are released by the seminiferous tubule. एथिरे एमती किछि हार्मोन अछंदी जहा के इफेक्ट करता है हार्मोन्स आर इफेक्टिंग स्पर्माटोजोआ. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन follicle stimulating hormone luteinizing hormone. Follicle stimulating hormone we stimulate release of some facts that help in the process of spermatogenesis. It is level increase and significantly as puberty. It is hormone secreted by hypothalamus. is जो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रो सिक्रेट होता है. फॉलिकल
स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन करता है? दे एक्ट ऑन सेरोटोनिन सेल. ये सेरोटोनिन सेल ऊपर एक्ट करता है विथ स्टिमुलेट रिलीज ऑफ सम फैक्ट्स दैट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. Then neutralizing hormone. The action Leydig cell which is stimulating synthesis secretion of androgen which is turn the process of spermatogenesis. ये थिला hormone affecting spermatogenesis. Then आसिबो structure of sperm. It consists of 4 parts: head, neck, middle piece and tail. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है it actually cover the whole body of the sperm. Head position it containing haploid nucleus. Head रे आउ गोटे स्ट्रक्चर अच्छी जे acrosome. Acrosome कौन? It is the structure filled with digestive enzyme help dissolving membrane of egg cell and help in the fertilization of the ovum. Then middle piece that produce energy for the movement of tail, and this is important for the motility for sperm, also help in the fertilization process or which essential process of fertilization. Semen जेतेबेले ejaculation होता है, so during ejaculation 200 to 300 million of sperm are released and at least 60% of them we should have normal shape of size and at least 40% of them maintain should have a grace motility. Semen, milky white organic fluid which are released by penis during ejaculation. It consists of the sperm and the fluid secreted by the associated gland ducts. Next step जो testicular hormone that is androgen. So androgen it maintain the function of the male associated ducts and gland. ये तो थिला structure of sperm. Then oogonia, oogenesis. Oogonia, primary oocyte. The oogonia from primary oocyte, the oogonia start for the process of meiosis and get arrested at the stage of prophase 1. Meiosis and prophase each primary oocyte surrounded by the gate surrounded granular cell jahaku ki we called primary follicle. जिते भी प्राइमरी ओसाइट अच्छा प्राइमरी फॉलिकल्स कहती. जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ए लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स गेट द जनरेटेड बिटवीन वर्थ एंड पॉवर्टी. देयर आर ओनली अबाउट 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स. जो प्राइमरी फॉलिकल जो रिमेनिंग रही जाए डिजेनरेट हेबा पर दे अगेन गेट सराउंडेड बाय मोर देयर आर ग्रानुलर सेल थिक सेल लेयर्ड होता है जाके सेकेंडरी as usual follicle कहती. Secondary follicle they give rise to tertiary follicle and tertiary follicle is characterized by presence of fluid cavity called as antrum. जो थिका डिस्कस करुथिले जो प्राइमरी फॉलिकल देयर आर रिमेन फर्दर बहुत सारा ग्रानुलस लेयर रु सराउंडेड होता है. थिकार जो थिका एक्चुअली ऑर्गेनाइज टू फॉर्म्स इनर थिका इंटरवल एंड आउटर थिका एक्सटर्नल. जो प्राइमरी ओसाइट होता है दे ग्रो साइज एंड कंप्लीटली मायोटिक डिवीजन हैला पर ये कौन करता है इट गिव्स 2 बॉडीज स्मॉल को पोलर बॉडी एंड लार्ज को सेकेंडरी ओसाइट कहती. ना प्राइमरी पर सेकेंडरी ओसाइट मिलगला फर्दर मायोटिक डिवीजन होता है फाइनली मैच्योर ओव्यूम मिली थाए एंड सेकेंड पोलर बॉडी मिली थाए. The ovum is formed by the process of oogenesis. The oogonia from primary oocyte, the oogonia start for the process of meiosis and get arrested at the stage of prophase 1.
These cells undergo meiosis but get temporarily arrested at the apophis and are called primary oocyte.